MCQ चे पेजेस पाठवलेत मी ग्रुपवर, त्यातले फक्त मार्टॉस सॉल्व्ह करून घ्या आज वेळ असेल तर. ठीक आहे, हो सर. ते पेजेस सेव्ह करा व्यवस्थित. उद्यापासून कॉलेजच्या लिस्ट लागणार येणार आहे. हॅलो, हो सर. उद्या हो सर. येस, उद्या कॉलेजच्या लिस्ट लागणार आहे, लक्ष ठेवा. उद्या कधी सर? कधी? उद्यापासून लागणार आहे लिस्ट. उद्या सेकंड लिस्ट लागणार आहे. उद्या तर लागणार आहे लिस्ट, असं पेपरला म्हणजे याला आलंय, न्यूज मध्ये आलंय. ते ऍडमिशन साठी लिस्ट लागेल उद्या, मे बी उद्या किंवा परवा, तेवढं लक्ष ठेवा.
सर हे न्यूजपेपर मध्ये आले का सगळीकडे? न्यूजपेपर नाही, आपल्या न्यूज मध्ये आले, न्यूज मध्ये. ओके ओके. ओके. चेतनने पाठवला मेसेज 5 डिसेंबरला लागणार आहे. ओके, म्हणजे मे बी गव्हर्नमेंटने सांगितलं लावायला, अजून 1-2-4 दिवसामध्ये ते लावून टाकतील लिस्ट. लक्ष ठेवा फक्त. काल आपण सिग्निफिकन्स ऑफ मिओसिस लिहिलेलं नाही ना? का लिहिलं रे? लिहिलं ना? लिहिलं हो सर. सर लिहिलं लिहिलंय. होतं सर. ओके. चलो. $36 स्टुडंट जॉईन झालेत. आज प्रेझेंटी पण घ्यायची आपल्याला, पण एवढे स्टुडंट जॉईन झाल्यावर घेऊयात. चलो एक लास्ट स्टेटमेंट लिया, एक लास्ट स्टेटमेंट लिख लो इसमें. Meiosis first, meiosis first, meiosis first, and meiosis second, meiosis second, meiosis first and meiosis second shows a stage, shows a stage, shows a stage between, in between, shows a stage in between
in between, which is short-lived, which is short-lived, which is short-lived. This stage, Interkinesis. yes, this stage between the two meiotic divisions, between the two meiotic divisions, this stage between the two meiotic divisions is called interkinesis. This stage between the two meiotic division is called interkinesis. There is no replication of DNA. There is no replication of DNA during interkinesis. There is no replication of DNA during interkinesis. No replication of DNA in interkinesis. Telophase first telophase first telophase first right? Telophase first is followed by telophase first is followed by cytokinesis first. Cytokinesis first. Cytokinesis first. Cytokinesis first. To form two haploid cells. Two haploid cells. Two haploid cells. To form two haploid cells. Two haploid cells. These two cells, these two haploid cells, ऐसा लिखो. These two haploid cells pass through this phase called interkinesis. This phase called interkinesis.
interkinesis is also called a short resting phase. A short resting phase. Interkinesis is also called a short resting phase or short interface. Short interface. Right on next line. Some cells do not show interkinesis and directly enter in prophase second of meiosis second. Some cells do not show interkinesis and directly enter into prophase second of meiosis second. प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड. चलो अभी हमने क्या लिखा है देखेंगे हम. झालं का रे लिहून सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी हमने क्या लिखा. हमने अभी लिखा है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक स्टेज होती है जो स्टेज शॉर्ट लिव होती है. शॉर्ट लिविंग इसका मतलब है छोटे से टाइम के लिए होने वाली फेज. Between the meiosis second and the meiosis first and meiosis second, a stage is present that is very short lived. This stage between the two meiotic division is called interkinesis. इस स्टेज को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. एंड ये जो इंटरकाइनेसिस है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, बिकॉज यू नो डीएनए रेप्लिकेशन हैज ऑलरेडी अकर्ड बिफोर the meiosis first is started, right? यहाँ पे एस फेज हुई थी ना, एस फेज पहले ही हो चुकी है. एस फेज में डीएनए एक बार रेप्लिकेट हो चुका है और आपको पता है कि इन द होल प्रोसेस ऑफ मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली वंस. तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये स्टेज आने वाली है जिसे आप बोलते हो इंटरकाइनेसिस. सो इंटरकाइनेसिस क्या है एक्चुअली में? इंटरकाइनेसिस ये एक शॉर्ट लीव स्टेज है, या फिर आप उसे बोल सकते हो ये एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज है. इंटरफेज के जैसी है, लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता नहीं. आपको दूसरे कौन से फेज इसमें दिखाई नहीं देंगे. डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होता नहीं है, तो एस फेज नहीं होता है. तो इट इज अ रेस्टिंग फेज, अ स्मॉल रेस्टिंग फेज. दिस स्मॉल रेस्टिंग फेज इज कॉल्ड द इंटरकाइनेसिस. ठीक है. तो इंटरकाइनेसिस कौन से सेल का हो रहा है? देखो ये पेरेंट सेल थी. पेरेंट सेल के अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल था. ठीक है. अब ये पेरेंट सेल क्या थी? 2n इज इक्वल टू, ये सेल थी 2c. क्या थी? 2n इज इक्वल टू 2c. जब इस पेरेंट सेल की एस फेज होने वाली है, जब ये पेरेंट सेल पहले वाले इंटरफेज में जाएगी, तब ये G1 में जाएगी, S में जाएगी, G2 में जाएगी. S इसका हो रहा है, S हो गया इसका, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये डबल हो जाएगा, है ना. क्रोमैटिन मटेरियल डबल हो जाएगा, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा. अब कंडीशन क्या होगी? अब कंडीशन होगी 2n इज इक्वल टू 4C. राइट.
तो अभी तो कंडीशन हो गई 2 n इज इक्वल टू 4c. आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस. अरे 79 वॉइस हियर नहीं हो रहा है किसको 3 days से. हे बाकीच्यांना आवाज येतो ना माझा क्लिअर रे? Yes, Yes, sir. sir. हो सर. 79 पाटील, हु इज दिस? पाटील कौन है 79? 79 नंबर. Okay, you please message me or text me on my personal WhatsApp number. Okay, 79 number. आपको अगर कुछ इश्यू है तो we will try to solve that, right? If it is occurring only about me, then we will have to look into the matter. क्या इश्यू आप थोड़ा सा देख लो, नेटवर्क का इश्यू है या साउंड का कुछ इश्यू है आपके पास. अगर आप यूट्यूब पर लेक्चर कर रहे हो तो साउंड में देखो आपके पास साउंड का कुछ इश्यू है क्या. साऊंडचा इश्यू असेल तर करून घ्या, काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ 2n इज इक्वल टू 2c. अभी क्या हुआ 2n इज इक्वल टू 4c हुआ है ना. अब 2n इज इक्वल टू 4c हो रहा है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सेल विल अंडरगो द मियोसिस फर्स्ट. इसका जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे बनेंगे 2 सेल. ये जो है ना इसका डिवीजन होने वाला है, इसका डिवीजन होकर 2 सेल बनेंगे. आफ्टर मियोसिस फर्स्ट यू विल ऑब्टेन 2 सेल्स. इसका कंटेंट क्या होगा इस सेल का 2n इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना कंटेंट. 2C. 2n इज इक्वल टू 4c है. अब इससे 2 सेल मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, n इज इक्वल टू 2c एंड n इज इक्वल टू 2c. तो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा n इज इक्वल टू 2c और यहाँ पर भी क्या मिलेगा n इज इक्वल टू 2c. 2 सेल्स यहाँ पर मिलेंगे. n इज इक्वल टू 2c, n इज इक्वल टू 2c, 2 सेल मिल गए यहाँ पे. अब ये जो सेल है दोनों नए, ये दोनों सेल है, दीज आर द डॉटर सेल्स, राइट? क्या है ये डॉटर सेल्स है. अब ये जो डॉटर सेल्स है, दीज डॉटर सेल्स विल अंडरगो द मियोसिस सेकंड. लेकिन डायरेक्टली जाएंगे क्या मियोसिस सेकंड में? नहीं. दे विल टेक सम रेस्ट ड्यूरिंग विच फेज? Interkinesis. Kinesis phase. यस, इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस में ये रेस्ट करेंगे and then they will enter into the Prophase second phase. of Meiosis meiosis second. right? And they will undergo the meiosis second, and once they will undergo the meiosis second, this cell will divide. This cell will divide. It will form the 2 new cells, and this cell will again divide, and it will form 2 new cells. So n is equal to 1c, n is equal to 1c, n is equal to 1c, n is equal to 1c. So what is the final stage? N, 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 right? 4 cells are obtained here, right? So what is the interkinesis? Have you got what is interkinesis? Interkinesis is the stage between the 2 successive meiotic divisions, right? So meiosis first और meiosis second के बीच में वाली जो फेज है उसे हमने बोला interkinesis. During the interkinesis, DNA replication does not occur. Remember this, DNA replication does not occur during the interkinesis. I hope this is clear. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, please can you show the last point? अभी मैंने एक तो इरेज कर दिया है. लास्ट कौन सा? ये वाला. Yes, sir. Done, sir. डन. ओके, कर दो इरेज सब अभी. Yes, sir.
चलो अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का रिवीजन सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे माइटोसिस। चलो जिन्होंने लेक्चर कुछ मिस किए होंगे उनका भी हो जाएगा आज माइटोसिस का रिवीजन। माइटोसिस को आप क्या बोलते हो? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल या फिर इक्वेशनल डिवीजन। यस, इक्वल या फिर इक्वेशनल डिवीजन आप इसे बोलते हो। कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले सबसे पहले जाती है इंटरफेज में। कौन से फेज में जाती है? इंटरफेस। इंटरफेस। फेज में जाती है। ओके, माइटोसिस आपको कौन से सेल में दिखता है? कौन से टाइप के सेल में माइटोसिस दिखता है आपको? सोमैटिक cells. सेल या फिर जो बॉडी सेल्स होते हैं बॉडी सेल। यस, सोमैटिक सेल या फिर बॉडी सेल जो होते हैं ये माइटोसिस दिखाते हैं। प्लांट में भी आपको माइटोसिस दिखता है। कहाँ पर दिखता है प्लांट में? कौन से टाइप के वेजिटेटिव? कौन से रिप्रोडक्शन में? वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स or in bacteria also binary fission occur, that is also occur by the process of mitosis। ये भी माइटोसिस से ही होता है। ठीक है, अब ये माइटोसिस और मियोसिस के रिवीजन के बाद मैं आपको और एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। दैट कंसेप्ट विल बी अ माइटोसिस। याद रखना, ये भी कंसेप्ट हम देखने वाले हैं इस लेसन में। छोटी सी कंसेप्ट है लेकिन पहले इसका रिवीजन कर लेंगे। तो माइटोसिस में को आपने बोला इक्वल डिवीजन। अब कोई भी सेल जो होती है, सपोज कोई पेरेंट सेल है, तो न्यूली डिवाइडेड कोई सेल है, तो न्यूली डिवाइडेड सेल अगर कोई होगी तो वो सबसे पहले प्रिपेयर करेगी डिवीजन के लिए। डिवीजन होने से पहले सेल प्रिपेयर करती है। वो जो प्रिपरेटरी फेज है उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। यस, दैट फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। तो फेज ऑफ प्रिपरेशन इज द इंटरफेज। ठीक है, अब इस इंटरफेज में सबसे पहली फेज आपको दिखेगी कौन सी होती है? G1 फेज। जीवन। G1 फिर कौन सी? S एस फेज। G2 कभी कभी सेल जीवन से एंट्री कर लेती है एक G0 फेज। इसे हम बोलते हैं G0 क्वासेंट स्टेज। G0 स्टेज को हम क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्टेज वेयर द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल तो लिविंग है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट द सेल इज लिविंग, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट It does not divide. the cell will not prepare for the division, right? Cell will not prepare for the division in the G0 stage। ये जो सेल होगी, कोई भी नई न्यूली फॉर्म सेल होगी, तो न्यूली फॉर्म सेल सबसे पहले जीवन में एंट्री करेगी या फिर वो G0 में जाके बैठ सकती है। हमने देखा था कि हार्ट सेल्स जो होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। Why? Because they have entered into which phase? G0 stage of the G1। ठीक है, फिर अगर कुछ जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते कुछ दिनों तक, फिर बाद में उन्हें जब डिवाइड होना है तो दे अगेन एंटर इनटू द G1 स्टेज। G1 से आएंगे S में, S से आएंगे G2 में। ठीक है, अब G2 से सेल एंट्री करती है M फेज में। सेल एंट्री करेगी M फेज में, M फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो M फेज है सेल साइकिल की, इसमें दो स्टेजेस है अगेन। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। एंड उसके बाद cytokinesis ओके, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस के हमने डिवीजन किए हैं कौन से फेज? प्रोफेज, Prophase, metaphase, anaphase, and endophase. telophase। यस, ये कैरियोकाइनेसिस है जिसे आप बोलते हो न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यस, तुष्णीम तू होतास काय झालं तू? तुष्णीम एम ऑडिबल? सर ते डिव्हाइसचा प्रॉब्लेम सर, लॅपटॉप मध्ये अटेंड करायचो ना सर, 3 दिवस झाले तुम्ही काय बोलता नुसतं मुक्का सिनेमा सारखं दिसत होतं, मग त्याच्यामुळे युट्यूब वर अटेंड करावं लागायचं। बरं बरं, मी तरी ते आठवण आली होती मला तुझी, मी 2-3 वेळेस बोलणार पण होतो की तुष्णीम दिसत नाहीये, कारण तुझा आवाज लक्षात राहण्यासारखा आहे ना। हा सर।
सर पण तुम्ही बोललेलं ते मला ऐकूच नव्हतं येत मग बरं रिप्लाय करून कसं देणार? ठीक आहे. त्याचं नाव पण पूर्ण नव्हतं, मला वाटलं दुसरं कोणी आहे का, त्यामुळे असं. ठीक आहे, झालं का आता प्रॉब्लेम सॉल्व? हो सर, हो झालं सर, आता येतं व्यवस्थित. ठीक. Okay. So prophase, metaphase, anaphase, and telophase. It is followed by the cytokinesis. Right? Cytokinesis is the division of the cytoplasm. Now, both of these processes means karyokinesis and cytokinesis. We collectively called it that which phase? M phase. M M phase. phase. It is collectively called as the M phase. Now, here we have discussed. Suppose here a newly formed daughter cell is there. एक न्यूली फॉर्म सेल है, यहाँ पर इथे एक नवीन फॉर्म झालेली सेल आहे, डॉटर सेल आहे. Daughter cell means newly formed cell will not directly undergo the division. It will first prepare for the division, and that phase of preparation is the interphase. G1 phase, S phase, and G2 phase will happen. In the G1 phase, cell will prepare for the proteins and enzymes which are required for S phase. Okay, proteins and enzymes which are required for the S phase will be produced in the G1 phase. Now, in the S phase, DNA is Replicate. Replicated. replicated means DNA is duplicated. DNA Doubled. DNA replication occurs in the S phase. S phase is followed by the G2 phase. In the G2 phase, proteins and enzymes which are required for the karyokinesis and cytokinesis will be produced, or you can generally say that the proteins and enzymes required for the M phase are produced in the G2 phase, right? Then the G2 phase is followed by the prophase. Okay, so what occurs in a prophase? काय होणार prophase मध्ये? First, we will Condensation of chromatin material. Condensation. Nuclear membrane disappears. Microtubule appears. okay. So before Same that, case moving to opposite. yes, before that we will discuss that the chromosome number is doubled. Chromosome number is doubled means earlier the parent cell was 2n is equal to 2c. 2C. काय असणार? Earlier parent cell was 2n is equal to 2c. This means that it will be having the chromosomes like this. This is one, and its homologous chromosome like this. So these two, I'm not using two different colors here. So here you can see these two are homologous chromosomes. These are present in which cell? Newly formed Parent cell. newly formed. और जब S phase complete होगी, after the S phase this will be having the condition. ये क्या है? 2n is equals to 4C. After the S phase, the content will be, just tell me, 2n is equal to 4C. 4C. So here the condition will be like this. This is one, this is another. Its copy is attached here. These two are called sister chromatids, right? Okay. Now here this and its copy will be attached here. इथे एक क्रोमोझोम आणि त्याची कॉपी इथे. ठीक आहे. नाउ देखो अभी इथे काय झालं बघा, कंडिशन काय झाली आता, 2n is equal to 4. So you can see this is 1, this one is considered as 1n, this is 1, this is considered as 1n. n किती झालं? 2n. किती क्रोमॅटिड? 1 2 3 and 4. So 4 you are observing here after the S phase, right? 2n is equal to काय झालं? 4c झालं. Now this 2n is equal to 4c condition is there. Cell has entered into the prophase first. Prophase first मध्ये काय होणार? Nuclear, sorry, not prophase first, just a prophase. Just a prophase here, right? Just a prophase. So during a prophase, early prophase, what will happen? Early prophase मध्ये काय होणार? Nuclear membrane Disappears. it will Start disappearing. it will start disappearing, not completely disappear. Centrioles will split and they will be near to each other like this. Okay, and in the early Chromosomes are condensed. chromatic material will start right now. So such a thread like structure you can observe. Such a thread like structure you can observe in the early prophase. And what will happen in the late prophase? It will be condensed. Yes, in the late prophase Spindle fiber starts forming. centrioles have moved some distance away from each other. Centrioles have moved some distance away from each other. Nuclear membrane is disappeared. Nucleolus is disappeared. Cell organelles are disappeared. And now you can find
the chromosomes like this, but these will be randomly placed in the cytoplasm. ऐसे आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लगेंगे. In which phase? Late prophase. Phase. Okay, late prophase. Now next phase will be the metaphase. 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 It is draw करतो मी metaphase. So what will happen in metaphase? Chromosomes are arranged at the equator. Yes, chromosomes will be arranged at the equator. So this is a Centrioles. Centrioles. centriole, right? Spindle fibers. Yes, these are spindle fibers. The spindle fibers will attach to the kinetochore of Kinetochore. yes, and now these chromosomes will be arranged in the middle, right? Here I'm drawing like this. I will draw like this. These will be arranged in the middle. These are arranged at the equator. Metaphase, right? Now metaphase is followed by which phase? Anaphase. 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 Metaphase is followed by the anaphase. यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एनाफेज को, ये इजी हो जाएगा देखने के लिए हमारे. You have understood what is metaphase. ठीक है, चलो. Anaphase. In the anaphase, the centriole will be here. It will show a microtubule like this. The centriole will be here. Will show microtubules like this. Now, this will be in the upper pole. Not in the upper pole. This will get splitted here, right? In the anaphase, Centromere will split. yes, it will get splitted here. I am using just eraser. Just a minute. I will use another color here. Yes. You can see that in the anaphase, this is a metaphase, na? So during the metaphase, they are arranged at the Equatorial plate. Equator. yes equator or the metaphase plate. Equator को क्या बोलते हैं? Metaphase plate. In the middle. Metaphase. They are arranged in the middle. Middle को arrange होता है, इसे हम बोलते हैं metaphase plate. Now what will happen in the mitosis? Cell division occurs only once. ये आपको पता है. So now this centromere will get splitted. Centromere split होगा. Centromere split होगा तो एक जो chromatid है ये ऊपर जाएगा और एक जो chromatid है ये नीचे आएगा. So now I will draw this like this. देखो अभी ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं. अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, राइट? स्पिंडल फाइबर इज अटैच विद द काइनेटोकोर. किसके साथ अटैच है? काइनेटोकोर. ये भी स्पिंडल फाइबर नीचे वाला इस काइनेटोकोर के साथ अटैच. तो ये ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इसे ऊपर खींचेगा, नीचे वाला इसे नीचे खींचेगा, तो इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा. जब इसका स्प्लिटिंग होगा तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो रहा है, राइट? तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा तो एक सेंट्रोमियर ऊपर खींचा जाएगा, एक नीचे खींचा जाएगा. जब ये एक ऊपर खींचा जा रहा आहे ज्यावेळेस हा सेंट्रोमियर वर ओढला जातोय त्यावेळेस त्याचे मागचे हे दोन हे जे ना असे हे जे दोन पार्ट parts of the chromatid will be trailing behind like this, and this will also be showing the structure like this. So you will find the structures like this which are trailing behind. समजलं तुम्हाला हे? Yes, sir. Yes, sir. हे वर ओढलं जाईल. आता इथे पण सेम केस होईल. This centromere will be pulled in the upward direction. Then this chromatid will be trailing behind. मग हे chromatid असे मागे जाताना दिसतील तुम्हाला, कारण त्यांना वर ओढलं जातंय ना ते. Okay, now you can see this is the anaphase. So in the anaphase, the splitting of the centromere has occurred. The splitting of centromere has occurred. And the splitting of centromere has pulled the chromosome into the two parts. Okay. So या एका क्रोमोझोम पासून दोन क्रोमोझोम बनले. One
is moved in the upward direction, one is in the lower direction. Now, next phase is a telophase. telophase. अब टेलोफेज में क्या होने वाला है? आता टेलोफेज मध्ये बघा काय होईल. टेलोफेज मध्ये Two daughter nuclei are formed. you can find two nuclei. Around Two nuclei are found within a single cell. This is one nucleus. This is another nucleus. Okay, and in this nucleus you can find this one chromosome, this one, and along with this one. Okay, so these two are the homologous chromosome, right? Again, these two, this one will be here and this one will be here. Try to practice it at home. ये फिगर जो है इसे प्रैक्टिस करो आप. जैसे मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ वैसे you should be able to draw it fast, right? तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा. एक बार आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. सामने देख देख के आपको आ रहा है, लेकिन जब तुम्ही स्वतः एकटे बसाल त्यावेळेस तुम्हाला येणं गरजेचं, राइट? नाउ हियर inside a single cell you can find the two nuclei. यहाँ पे हुआ telophase. What changes are occurring in the telophase? Spindle fibers get disappeared. Yes. Nuclear membrane and nucleolus reappears. स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पे सेंट्रोजोम बन जाएगा, राइट? उसके बाद में start form. न्यूक्लियर Cell organelles are formed. yes, Nuclear membrane. reappears, nucleolus reappears, then cell organelles will be reformed, like cell organelles like the endoplasmic reticulum and Golgi complex. These are reformed. And very important point, ये जो है क्रोमोसोम आपको ऐसे नहीं दिखेंगे. कैसे दिखेंगे? Chromatin material. In the form of Chromatin material. क्रोमैटिन दिखेंगे, है ना? तो इसका डीकंडेंसेशन होने वाला है और आपको क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखेंगे. ठीक है. अब लास्ट स्टेज होगी, एक सेल के हो जाएंगे दो सेल. Cytokinesis. Cytokinesis. So after the cytokinesis you can find that the two cells will be formed. So this will be, just tell me what will be the condition here? 2n, है ना? 2n is equals to 2c. 2c. Yes. और एक बार देखो दिखाना पड़ेगा. ये तो है वैसा का वैसा. यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो ये ऐसा था डीकंडेंस होने से पहले. देखो अभी कितने n, ये एक n, ये एक n, कितना? 2n is equal to 2c. Equals to 2c. 2n is equal to 2c. This whole cell 2n is equal to 2c, and this is also 2n is 2n equal equals to 2c. 2n is to equal the to parent cell. Parent cell क्या थी? 2c. Parent cell 2n is equals to 2c. है ना? ओरिजिनल पैरेंट सेल क्या थी? 2n is equal to 2c. 2c. और ये डॉटर सेल्स कैसे बने? 2n is equal to Equals to 2c. the single cell which was 2n is equal to 2c is divided and it has formed the two new daughter cells which are again 2n is equal to 2c. So this type of the division is the Equational division. equal division. इसे और एक नाम है क्या? Homotypic division. याला अजून एक नाव आहे बाळांनो. काय? होमोटाइपिक डिवीजन. होमोटाइपिक. ठीक है, होमोटाइपिक डिवीजन. ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा इवेंट हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ है, G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ. These all events are called as Cell cycle. देगा cell cycle. Cell cycle. What is a cell cycle? The sequence of events occurring in the life of the cell. Right? The sequence of events occurring in the life of a cell is called as a cell cycle. और इसमें दो phases हमने देखे, interphase और the M phase. Okay, so these are all considered as the parts of the cell cycle or the sequence of the cell cycle. Sequence of events occurring in the cell cycle. So this is all about the mitosis. Okay, so mitosis occur in the somatic cell or the body cell. So what is the significance of mitosis? It also occur in the vegetative reproduction, right? So mitosis is the process that is required for
the replenishment means the replacement of the old cells. जो old cell होते हैं उनके replacement के लिए what is the significance of mitosis? क्या है significance? Recovery of worn out cells or dead cells. Mitosis is required for the replacement of the old and worn out cell. जो old cells होते हैं या फिर जो old worn out cell होते हैं, dead cell होते हैं, उन्हें replace किया जाता है by the process of mitosis. उसके बाद mitosis plant helps in asexual reproduction and vegetative reproduction. प्लांट में असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी इनमें इनका रोल होता है, या फिर फंगाई में भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? Binary fission. यस, इसमें भी माइटोसिस इन्वॉल्व होता है, राइट. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस. और कुछ सिग्निफिकेंस और ऐड कर सकते हैं हम वैसे. Sir, Helps in maintain the growth and chromosome development. number of daughter cells. क्या? Maintain the chromosome number of daughter cells. Yes, maintain the chromosome number, but in which case they can maintain the chromosome number in case of the body cells. Somatic cell में chromosome number को maintain रखते हैं, right? So they can maintain the chromosome number in the somatic cell, and they also help in the growth and development. तो माइटोसिस Sir, ते से genetic information पण स्टोर करतात ना. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तर ती ऑलरेडी डीएनए मध्ये आहे. ठीक आहे. Okay. So significance of mitosis is in the replacement of the old and worn out cell. Mitosis is required for the growth and development of organism. हमारी भी जो ग्रोथ हुई है वो माइटोसिस से हुई है. छोटा बच्चा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, किससे बढ़ती है? माइटोसिस से. साइज बढ़ती है, किससे बढ़ती है? माइटोसिस से बढ़ती है, राइट. Vegetative reproduction or asexual reproduction is also occurring in various organisms, and that is also due to the mitosis. So this is all about the mitosis. Okay. Now we have to discuss about the meiosis. लेकिन उससे पहले एक याद आया है मुझे. Do you remember this? Apoptosis. Formation of fingers. But what is apoptosis? Sir, ते काहीतरी म्हणजे Cell सेल death. डेथ होतात. हा, प्रोग्राम सेल डेथ. Program cell death. It is not just a cell death. It is a Program program cell. cell death. You know, program cell death. Program cell death means क्या? जब एम्ब्रियो होता है तो जनरली देखो थर्ड मंथ जब होता है ना एम्ब्रियो, देखो फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है बच्चे का. पहिल्या महिन्यामध्ये हार्ट बनून जातो. दूसरा और तीसरा जो मंथ होता है जनरली थर्ड मंथ तक लिम्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं. लिम्स म्हणजे हाथ पाय पूर्णपणे बनून जाते. एंड फिंगर्स आर ऑल्सो मेड. ठीक है. जब ये फिंगर्स बनते हैं ना, एक्चुअली दे आर अटैच. ऐसे आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ दैट. जस्ट अ मिनिट. दाखवलं होतं ना मी तुम्हाला पिक्चर अपोप्टोसिसचं. Yes, sir. Yes, sir. अभी भी दिखाता हूँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए. नवीन तो कोई नहीं आता, बट स्टिल देख लो एक बार. एपोप्टोसिस फिंगर्स दाखवले होते ना. एपोप्टोसिस ये देखो, ये पहले ऐसे ऐसे अटैच होते हैं फिंगर, फिर उसमें ये बन जाता है क्या, इसके बीच बीच में के जो सेल्स होते हैं ना, इनके डेथ होती है इनकी. इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, है ना. देखो यहाँ कुछ लोगों में ये अगर कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस तो ऐसे फिंगर्स अटैच दिखते हैं. लेकिन एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस में एक्चुअली ये पूरा सा पूरा ये जो रीजन है ना बीच में का, ये कट हो जाता है क्योंकि सेल्स यहाँ के डाई हो जाते हैं. तो इट इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस. नेचुरली प्रोग्राम सेल डेथ अकर्स और ऐसे फिंगर बनते हैं. इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ. दैट इज द एपोप्टोसिस. और एपोप्टोसिस के जैसा एक दूसरा वर्ड है.
देखो अभी हमने देखा एपोप्टोसिस को मैंने बोला प्रोग्राम सेल डेथ. सो फिंगर फॉर्मेशन occurs by the program cell death process, right? So सर नेक्रोसिस. हाँ नेक्रोसिस बताने वाला हूँ मैं, जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पे हमने देखा एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ. इन द प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस the cells between the embryonic fingers die in a natural process, right? So embryonic जो फिंगर अभी हमने पिक्चर दिखाया आपको, उसके बीच बीच में जो लेयर्स होते हैं सेल्स के, वो डाई हो जाते हैं और फिंगर अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. और इसके अपोजिट वाली एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ द सेल, राइट? सो नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ द सेल. पर लेकिन नेक्रोसिस किसका होता है, कौन से टिश्यू का होता है? इंजर्ड टिश्यूज. इंजर्ड, बर्न, है ना? जो टिश्यू इंजर्ड होते हैं, जो टिश्यू बर्न होते हैं, तो ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू डाई होते हैं, इसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस. इसे हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस. ओके. सो इट्स नॉट गुड फॉर द सेल्स टू डाई बिकॉज ऑफ द इंजुरी. और जब स्क्रैप से या फिर हार्मफुल केमिकल से, इंजुरी से या बर्न से जब सेल की डेथ होती है, तब हम इसे बोलते हैं नेक्रोसिस. लेकिन नेक्रोसिस से अपोजिट है कौन सा? एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस इज नॉट द डेथ ऑफ द इंजर्ड सेल. यस यस संध्या, but apoptosis is not the death of the injured tissue. It is the natural process in which the program cell death occur. यानी जो सेल बाद में डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है उन्हें निकाला जाता है, and this is called as the program cell death और apoptosis. तो ये इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डेथ ऑफ द इंजर्ड टिश्यू कैन बी कंसिडर्ड एज. इसे आपका आंसर होना चाहिए नेक्रोसिस and death of the program death of the cell, or the during the formation of the fingers. या फिर only example भी पूछा जाएगा. Suppose the death occurs during the formation of finger, can be considered as. So your answer should be apoptosis. Yes. Okay. So let us discuss about the meiosis now. अब हम meiosis discuss करेंगे. Meiosis is Reductional division. division. occurs in two steps: meiosis first and Meiosis second. meiosis second. Meiosis first is actually called as, Reductional division. and meiosis second is actually called as Equational division. Equational division. equal or equational. So meiosis second is like Mitosis. Mitosis. meiosis second is like mitosis, right? Meiosis first is the reductional division. Okay. So meiosis occur in the germ cells or the Reproductive cells. so during the formation of gametes or in the formation of some sexual spores, the meiosis can occur. During the formation of gametes or the formation of the sexual spores, the meiosis can occur. Before the meiosis first, G1, S and G2 phase occur. During the S phase, DNA is doubled. देखो जैसे माइटोसिस में हमने देखा वैसे ही meiosis में भी इंटरफेज होने वाली है. इंटरफेज में DNA is doubled only once, but cell divides in meiosis twice. Cell divides twice, and DNA double only once. DNA डबल एक ही बार होता है, लेकिन सेल दो बार डिवाइड होती है मियोसिस में. दैट इज द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस. अब मियोसिस का वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मियोसिस इज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस. Sir, यस बताओ. sir, in meiosis, cell go under G0 phase. The parent cell can undergo the G0 phase. Yes, parent cells can undergo the G0 phase. जिस सेल को डिवाइड नहीं होना है वो G0 में जाएगी. ठीक है. हेलो
सर इंटरकायनेसिस मध्ये पण G1 आणि G2 फेज असते का? इंटरकायनेसिस मध्ये इंटरकायनेसिस इज अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज. त्याच्यामध्ये G1 G2 सारख्या फेजेस दिसू शकतात. सच फेजेस कॅन अकर बट एस फेज विल नॉट अकर. सर मग ते पण G1 फेज मधनं G0 फेज मध्ये जाऊ शकते का? नाही जाऊ ते तिथे नाही जात G0 मध्ये बिकॉज इट इज अ व्हेरी शॉर्ट फेज. ओके. इट इज वेरी शॉर्ट स्टेज राइट. अब देखो सुरेश, हेलो. Yes, sir. Yes, what was your question? Sir, cell go under G0 phase in meiosis. Cells can undergo G0 phase in meiosis when they do not have to divide. Generally देखो आप देखोगे कि sperm formation occur in the testis. टेस्टिस में होता है स्पर्म फॉर्मेशन. तो टेस्टिस में एक स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें जिससे स्पर्म बनता है. वो जो सेल्स होते हैं ना उन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोसाइट. कौन से सेल? स्पर्मेटोसाइट. जिस सेल से स्पर्म बनते हैं ना उन्हें स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं. अगर ये स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं इनका नंबर एक्चुअली कम होता है लेकिन स्पर्म तो बहुत बनाने होते हैं. तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोसाइट उसका नंबर बढ़ाते हैं. जब ये उनका नंबर बढ़ाएंगे तब ये मियोसिस करेंगे. ठीक है. तो जो ओरिजिनल सेल्स होते हैं स्पर्मेटोसाइट के दे कैन अंडरगो द G0 फेज. जो बहुत सारे जो मैच्योर नहीं हुए ना सेल्स, जो सेल्स मैच्योर नहीं हुए, जो मैच्योर हो रहे हैं, दे कैन अंडरगो इनटू द G0 फेज. ठीक है. Yes, sir. Okay. So let us discuss about the meiosis first. What is the time now? 7:55. 7:55. Okay, okay, चलो. तो meiosis first का प्रोफेज फर्स्ट ले लेंगे हम. meiosis first. प्रोफेज meiosis first में सेल एंट्री करेगी प्रोफेज फर्स्ट. So what are the stages in the prophase first? Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and dikinesis. Okay. So before the leptotene stage, the parent cell will be having such condition, right? Chromatic material will be there. 2n is equal to 4C. 4C because S phase has occurred. So condition is 2n is equal to 4C, right? During leptotene stage of the prophase first, a thin threaded structure will be formed. You can find such structures which are a thin thread like structures, but which are not paired with each other, right? तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे. This stage is a Leptotene. that is a thin threaded stage. Leptotene is followed by Zygotene. zygote phase. zygote में they will show the end-to-end pairing, right? Two homologous chromosomes will show the end-to-end pairing. ऐसे क्रोमोसोम की पेयरिंग दिखेगी आप. Now, this process in the zygotine phase, in which the end-to-end pairing has occurred, is called as. Synapses. Synaptonemal complex will form. It is a synapsis. This process is synapsis, and it will form the complex. Synaptonemal complex. When we can observe them under the electron microscope, you can find a complex structure, and the structure is called which complex? Synaptonemal complex. Yes, Complex. synaptonemal complex. Okay. Now, zygotine will be followed by the pachytene phase. In the pachytene phase, crossing over is completed, right? But which stage is observed in the pachytene phase? Recombination nodule. Yes, recombination nodule is observed as well as. What is this? Crossing over. ये क्या है? Tetrads are formed.
Yes, tetrad formation. Means Yes, tetrad formation or the bivalent formation. This is a tetrad, right? So in patching phase, you can see the tetrad. सर मग ते क्रॉसिंग ओव्हर कोणत्या फेज मध्ये होते? क्रॉसिंग ओव्हर याच फेज मध्ये होते ना. हे काय क्रॉसिंग ओव्हर चालू आहे नाही, हा. राइट? सो क्रॉसिंग ओव्हर इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द पैचेटिन, यानी पैचेटिन में ही क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाता है? कंप्लीटेड. क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पैचेटिन फेज एंड टेट्राड फॉर्मेशन अकर्स. और ये जो पॉइंट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसे और एक नाम है, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. क्या बोलते हैं इसे? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल. Recombination nodule. So this is a recombination nodule. This is also recombination nodule. So recombination nodule is formed during the patching phase. Patch का मतलब होता है thick threaded stage. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे thick दिखाई दे रहा है एरिया, यहाँ पर भी thick दिखाई दे रहा है एरिया. Right? So that point where the crossing over is completed is called as a recombination nodule. And tetrad formation also occurs in the patching phase. ठीक है? टेट्राड कोई और एक नाम है, टेट्राडलाच बायोवैलेंट असं पण बोलतात. Remember this. Tetrad is also called as a bivalent. So bivalent or tetrad is clearly visible in which phase? पैचेटिन. Patching. Now this next stage. कौन सी है? डिप्लोटिन फेज. डिप्लोटिन, two threaded stage. इसमें what occurs? What is the feature? Chiasmata is clearly Desynapsis. Desynapsis occurs. Desynapsis occurs means dissolution of, synapses. yes, dissolution of synaptonemal complex. जो भी synaptonemal complex एक्स्ट्रा वाले जो भी बने थे, बहुत सारे बनते हैं ना, तो जो भी बने थे वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे. तो dissolution of synaptonemal complex will occur, but still the chromosomes are attached at one point. At chiasmata. Chiasmata. yes, chiasmata is the point of crossing over where the chromosomes are still attached. So in the diplotin phase, the desynapsis will occur. Chromosomes will try to separate from each other, right? So separation of chromosome starts from which phase? Diplotin. Diplotin phase. Chromosome starts to separate from the diplotin phase. Desynapsis will occur. Okay, desynapsis will occur. Chromosome will start to separate from each other. Dissolution of synaptonemal complex will occur, and the chromosomes will be still attached at the point of crossing over. That will be called as the chiasmata. Yes. So here this point is the. Recombination. आता काय म्हणायचं याला? Chiasmata. Chiasmata. कसा दिसतो बघा? X shape. कैसे दिखता है? X shape है ना? X shape. X shape दिखता है. कैसा? X shape structure is the chiasmata. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now next stage is a Diakinesis. 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 In the diakinesis, movement of chiasmata occur in the opposite direction, है ना? And this is called as Terminalization of chiasmata. Terminalization. diakinesis में क्या होगा? Terminalization of chiasmata. चियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होने वाला है. तो अब ये ऐसे निकालेंगे हम. Only the terminalization like this. They are attached at the termini, right? ये क्रोमोसोम. This is a diakinesis. And now diakinesis will be followed by which phase? Metaphase 1. Metaphase, right? So during the metaphase first, these
will be arranged in the equator. कहाँ पर arrange होंगे ये? Equator में arrange. This we will discuss in tomorrow's lecture. लेकिन remember tomorrow at 11 o'clock, 11 to 12:30, all students have MCQ discussion. K batch is also invited for this MCQ discussion because this MCQ discussion is having only the MCQs of the cell cycle and cell division. Okay, K batch students. Yes, sir. Yes. अगर कॉलेज तो नहीं है ना कल आपको, तो you can attend 11 to 12:30. Yes. सर यामध्ये टेस्ट असणार आहे का? Test असणार आहे. Test will be there on the Saturday. Saturday on the cell cycle only. Cell test पण cell cycle वरच असेल फक्त. ठीक आहे? Sir, Okay, for sir. K batch also. Huh? Test is for K batch also. Yes, K batch also. You can give the on the cell cycle na? Yes, sir. Yes, sir. You have attended whole lesson na? This whole lesson you have attended na? Yes, batch sir. na? Yes, sir. Yes, then you can give, no problem. If you have any issues, you can contact me. Sure. Can we leave? Bye, sir. Bye bye. Sure. बाय सर. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye bye. अभ्यास करा. Oh, sir. Okay, sure.